Hello everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concepts, and working on your problem solving approach. Let us now navigate through this one. A carpet lying on a ground has a length L, width A, and a small thickness D. So you can say that this carpet is a cuboid of very small thickness. इट इज रोल्ड ओवर अ लाइट सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ रेडियस दिस। उसके बाद क्या कह रहा है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, सिर्फ हॉलो पाइप है ये, और इसके ऊपर हमने कारपेट को रोल कर दिया। डन है। तो देखो कारपेट कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वाला जो वॉल्यूम है, आई मीन यहाँ से जो अंदर तक ऐसे जाएगा, वॉल्यूम इन दिस एरिया आई कैन से। ओके। And then it is said that, this cylindrical pipe has an inner radius of this one, and because of carpet getting rolled over it, it is gaining some external radius, outer radii. And let's say that outer radii has a value of capital R. ठीक है। सो कार्पेट को रैप करने की वजह से यहाँ पे आर रेडियस वी आर गेनिंग, outer radii is R. Increase in gravitational potential energy of the carpet is delta U1 compared to its initial position when it was lying flat. So when it is lying flat, we can say its potential energy will be how much? I mean, it has a thickness of d by d. So its center of mass is at a height of d by 2 from the leveled ground, right? क्योंकि अगर आप क्यूबॉइड को देखो, क्यूबॉइड का हाइट अगर तुम्हारा h है, हाइट कहने का मतलब width, अगर ये h है, then its center of mass will be somewhere here at a height of h by 2. So that is why I'm saying initially it has certain potential energy because of its center of mass being at certain height from the leveled ground. Let us say that potential energy is U. I mean, we generally define change in potential energy. Absolute value we only define when we have fixed the potential energy at a certain position. Again, that is not the part of our discussion, but still, I'm saying its absolute value is U. And let's say here, because of carpet getting rolled over this pipe, which already has a height of small r from the ground, its center of mass is getting risen by certain height, है ना, certain height से वो इंक्रीज कर रहा है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास ये सिलेंडर है ऐसा, और इसका ऐसा कुछ हो रहा है ऐसा, it has some outer radii, so its center of mass from the leveled ground is at what height? It is at the height equal to the outer radii, right? So r, so let's say its potential energy is U1. So change in potential energy, that is U1 minus U, is equal to delta U. And then what is getting said? In another experiment, the carpet was folded to give it a shape of cuboid. And another experiment में आपने carpet को cuboid का shape दिया, fold करके ऐसे। So देखो, ये जो cuboid बना है, इसके पूरे वॉल्यूम में क्या है तुम्हारा, क्या है, कारपेट है। जैसे ये जो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो पाइप जिसपे आपने रैप किया है, इस वॉल्यूम में तुम्हारा कारपेट नहीं आया। कारपेट इसके ऊपर रोल करके रैप किया गया है, समझ रहे हो। अगर मुझे इस केस में निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ कारपेट यहाँ पे अगर निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? एरिया in which carpet is there, so that is equal to pi r square minus r square. So this is area of cross section in which pipe is there. Okay, this carpet is there, and then its volume will be equal to this into a. So this is the volume, right? एंड यहाँ पे अगर आप कारपेट को देखो, थर्ड डायग्राम में देखो, देन दिस कारपेट इज कंटेन्ड इन दिस टोटल वॉल्यूम, एंड दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए बी इंटू द हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड। लेट अस से दैट इज एच, सो ए बी एच। अब देखो यहाँ पे अगर एच हाइट का क्यूबॉइड आपने बनाया है, तो ये सेंटर ऑफ मास इसका कितने हाइट पे होगा? एच बाई टू हाइट पर होगा, ठीक है। तो इफ दिस कंप्लीट इज एच, देन दिस विल बी एट अ हाइट ऑफ एच बाई टू। And in the third case, it is getting said that its gravitational potential energy is delta U2, higher than its initial position. So let us say, delta U2 higher. So, okay, that was initially potential energy of carpet. Increase in potential energy of carpet is delta U1. चलो ठीक है, उसी टर्म में मैं लिख देती हूँ। अगर मैंने बोला initial potential energy is U, then finally it is getting increased by delta U1. So this will become U plus delta U, ठीक है। And finally it is getting increased by delta U2. यहाँ पे इससे यहाँ पे इंक्रीमेंट है delta U2, so U plus delta U. And in the question it is getting asked that when this is okay, so it is given that D equal to this, find B for which delta U1 is equal to delta U. कहने का मतलब u plus delta u1 has to be equal to u plus delta u2. Then only you will say delta u1 is equal to delta u2. So simple meaning ये है, ये कब पॉसिबल है? जब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास जितने हाइट से यहाँ राइज किया है, उतने ही हाइट से यहाँ भी राइज।
then only increase in potential energy in both the cases is going to be same. That is delta U1 is equal to delta U. डन है. तो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ये समझ में आया दैट आर विल बी इक्वल टू h/2. नाउ द वर्क इज ऑफ कैलकुलेटिंग दिस आर. आर सबसे पहले कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे. तो बेसिक आइडिया देखो, आपने जब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे होगे या फिर बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा, इफ देर इज अ रॉड एंड यू आर स्ट्रेचिंग इट, यू आर कॉम्प्रेसिंग इट, द थिंग दैट स्टेज कॉन्स्टेंट इज वॉल्यूम. ठीक है. तो यहाँ भी जब आप कारपेट को डिफरेंट डिफरेंट स्टेज दे रहे हो, व्हाट इज स्टेइंग कांस्टेंट इज वॉल्यूम. सो इनिशियल वॉल्यूम इफ यू चेक दैट इज AdL, एंड दैट इज गोइंग टू बी वॉल्यूम थ्रू आउट, क्योंकि कारपेट, सेम कारपेट को आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप दिया है. सो वॉल्यूम इज गोइंग टू स्टे कांस्टेंट. अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, देन वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू ए, एंड दिस इज गोइंग टू बी AdL. सो ए आप कैंसिल कर लो. ठीक है. And then R, we are interested in calculating R, right? So R square minus R square is dl by pi, okay? And then your this R square is equal to dl by pi into small r का square. So this is this thing. अगर मुझे यहाँ पे कैपिटल R निकालना है, do its root, okay? So that we will do later on. और सेकंड केस में अगर आप देख लो, या फिर यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू आप पुट करके रखना चाहते हो, आप रख सकते हो. सो स्मॉल आर क्वेश्चन में दिया हुआ था L/100, स्मॉल आर इज गिवन एज L/100 रूट पाई. ओके. सो लेट अस पुट इट हियर, D इंटू L बाई पाई इंटू आर का स्क्वायर कितना होगा, L स्क्वायर बाई 10⁴ इंटू पाई. ओके. सो ओके, नो, व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज ब्लंडर, है ना. कैलकुलेशन क्या कर रही हूँ मैं. दिस कैनॉट बी दिस वन, dl बाई पाई प्लस आर स्क्वायर होगा. ठीक है. तो लाइक दिस, dl बाई पाई प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर कर लो आप, दिस इज l का स्क्वायर एंड दिस इज 10⁴, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी योर पाई. ओके. एंड d का वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, d इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴l. सो इफ यू पुट दिस टू थिंग्स, आई मीन इसको भी पुट कर लो, d का वैल्यू 10⁻⁻⁴l by pi, and okay, d is equal to 10⁻⁻⁴l. एक और l था, सो l स्क्वायर होगा प्लस, और ये भी तुम्हारा क्या है, 10⁻⁻⁴l स्क्वायर बाई पाई. सो दिस टू आर इक्वल, राइट. ये दोनों ही इक्वल है. सो आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, चलो यहीं पे लिखती हूँ, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁴l स्क्वायर बाई पाई. So this is nothing but r is equal to √2 10⁻⁻2l by pi. So this is this thing. Now let us talk about h. तो h तुम्हारा क्या होगा, ABH will be equal to ADL. So A आप कैंसिल कर लो, h हमें निकालना है, h is equal to DL by B. Now let us put the value of D. D का वैल्यू क्या था, 10⁻⁴l into L by B. So this is equal to 10⁻⁴l square by B. Okay. Now, I mean potential energy change same होने के लिए we have already written the condition. कंडीशन क्या था तुम्हारा, R should be equal to h/2. So R तुम्हारा कितना आया, देखो R है √2 10⁻⁻2 √2 into 10⁻⁻2 L square. L है ना, सिंपली L है, L by pi. Okay, and this is equal to 10⁻⁴l square by B. Now let us, we have to calculate B, right? So this will become how much? -2 will be remaining here. One L will get cut. L cancel कर लो आप. B is equal to, I mean this is going to be, okay. And here I have written pi. Okay, let me check with this one. This was your DL by pi. Okay, and this is by pi. Okay, so this is root under. Okay, यहाँ पे root pi बचने वाला है, ठीक है. So this is your root pi. Now B is equal to how much? 10⁻⁻2 into L into root pi by √2. Okay. And root under pi by 2 का value given है question में. Root under pi by 2 is 1.25. That is what we have to take. So let us take it. 1.25 divided by 10⁻⁻2 को 100 लिख रही हूँ, इसको भी 100 लिख लेती हूँ यहाँ से हटाकर, and this is L. So simply solve it. This will become this. And this is your this, and this is your this. Okay, so we R is equal to h/2. by 2 हमने लिखा नहीं, देखो बहुत सारे कैलकुलेशन एरर्स कर रही हूँ मैं. h/2 करना था ना, by 2 आप लिखोगे यहाँ यहाँ. So this is by 2.
Okay, so this is going to be 4 into 2 into 2. So that's it, 160. So B is equal to L by 160. This is going to be your answer. Okay, so basic concept ये था कि while you are giving this carpet different shape, volume will stay constant. It was centered around this thing. And then second, very simple concept that potential energy will be equal to, rise in potential energy is getting guided by rise in center of mass. So that is what I've taken care of. I hope this question is clear, but yeah, if you have any doubt anyway, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.